Hello, we are back with Lifeless Ordinary. This is Aysha Zamidar and this is Naveed Faruqi. We are here with another interesting topic. हम क्या बात करने जा रहे हैं आज? we all love Netflix, right? Yeah. And everybody is watching this, right? And there is a hot TV series on Netflix. It's an Indian 8-episode series by Sanjay Leela Bansali. And as we all know, उनकी जो creation होती है, मेहनत होती है, देवदास, and then बड़ी उनके, it's just opulent. And I mean, well, you guessed it. We're talking about this eight episode series called Heeramandi. Oh, yeah, Heeramandi. किसी ने मीम शेयर की मुझसे, उसमें बकरे और गाय रखे हुए थे और वही कॉस्ट्यूम बनाए हुए थे और लिखा हुआ था बकरा मंडी कमिंग सून. अच्छा, लेकिन but खैर interesting, very interesting छोटा mini series drama, lovely. It took me like 2.5 days. I would come back from work, shower, change, have dinner, so on. उसके बाद मैं बैठ के 2-3 episodes देख के सो जाती थी. Just finished it and definitely worth watching. इसके अंदर बात ये है कि मेरे 2-3 कंसर्न थे एंड इत्तेफाक से मैंने पहले देख ली और आयशा ने बाद में देखी और हमारी बात हो रही थी तो मैंने आयशा को थोड़ा सा फीडबैक भी दिया कि यार मेरा ये फीलिंग है, चलो तुम देखो तो फिर तुम बताना. एंड देन ऑब्वियसली एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट एंड देयर आर सो मेनी व्यूज. हमारे अपने व्यूज हैं एंड आई वी वुड वांट कि आप लोग हमारे व्यूज जो हम शेयर करेंगे अबाउट दिस रिव्यू अबाउट द सीरीज कि वो बताइए कि ठीक है नहीं है और कैसे. बताओ. अच्छा, मैंने जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो नोट की, हीरामंडी is talking about लाहौर and लाहौर में सलीस उर्दू नहीं बोली जाती, पंजाबी बोली जाती है. लाहौर में असी तुसी किया जाता है और किया जाता था खास तौर पे प्री पार्टीशन और पार्टीशन के वक्त में तो बिल्कुल भी नहीं. वहां तो और ज्यादा, अब तो फिर भी रिलेटिवली लोग वहां पर उर्दू और इंग्लिश बोलते हैं, पहले तो बिल्कुल पंजाबी बोलते थे. तो ये यहाँ पर ये नवाब और हिस्टोरिकली मैं यही आई वांटेड टू गो अहेड एंड रिसर्च दिस दैट लाहौर में इतने नवाब भी नहीं थे, मतलब नहीं, नवाब करीम थे लेकिन लाहौर में नहीं रहते. चौधरीज और जाट्स और इस टाइप के लोग थे. और नवाब जो थे लखनऊ में, जोधपुर में, जूनागढ़ में, हैदराबाद में, यहाँ थे. The story is okay, fun, typical Indian story drama, whatever. Drag. But the language that they used, the set designing, the clothes, the jewelry, I mean, that was quite fun. Oh yes, and जिसको कहते हैं ना, मुगले आजम का एक गाना बनाया था, प्यार किया तो डरना किया, उसके लिए इतना बड़ा कोई सेट लगा था और कहते हैं वो सेट 3 महीने में तैयार हुआ था और वो सेट 3 साल तक लगा रहा था. लोग एज एन टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने आते थे. तो इसका संजय लीला बंसाली के हर सेट उसका वैसे ही है तकरीबन. इस पे इतना काम है, इतनी डिटेलिंग है, इतना कुछ है. लेकिन आयशा, मैं एक और बात से डिसएग्री करूंगा. एक तो पंजाबी वाली बात हो गई, दूसरा ये कि वाई हीरामंडी मतलब इंडिया में बन रही है, वाई दे मेकिंग अ थिंग ऑन क्या कहते हैं, I think that's more political. Yeah, I mean, I would say that it's more political because because India has definitely gone ahead and taken a slightly more negative stance towards Pakistan for the past 10 years. And we are seeing more and more movies about Pakistan bringing up, like, growing up, we never heard Pakistan's name, but now Pakistan is the hot item in the world these days, which is really interesting. Yeah, so मेरा व्यू था और है, एक तो मैंने सुना था कि संजय लीला बंसाली ने कहा कि उसकी ख्वाहिश थी कि इसमें वो पाकिस्तानी एक्टर्स को लेता, माहिरा खान और इसको आपका फवाद खान को, जो कि उसमें सूट भी करते. आई थिंक पाकिस्तानी अगर एक्टर्स होते कम से कम वो उर्दू का एक्सेंट और बेहतर हो जाता, क्योंकि मैंने नोट किया यहाँ जो शायरी हो रही थी उर्दू में, जो लड़की हीरोइन है और सारे लोग कर रहे थे, तो वो
ख्वाब को खाब खे नहीं बोल पाते, वो गलत नहीं बोल पाते, तो उनकी तलफ़्फ़ुज़ में वो क्लैरिटी नहीं थी उर्दू की जो होती है। पर जो उनका है ना, द तुमने ये देखा था कि जो कपड़े पहन रहे थे, लाइक गरारा नहीं पहना जाता था लाहौर में 1940s में। लाहौर के अंदर बहुत सारी चीजें, झूमर और टीका जो है वो इतना नहीं पहना जाता था। ये जो ज्वेलरी के पीसेस हैं, ये एक्सट्रीमली दिल्ली लखनऊ थे। और वो जो 17 गज का गरारा पहनती है, दैट मलिका बेगम, मलिका जान, तो वो जो गरारा पहनती है, शी इज लाइक वेयरिंग लाइक दिस टिपिकल लखनऊ गरारा which has like 17-18 yards that falls with a trail behind it. But what clothes, and the embroidery. And did you see that, like, in interesting things that they show that the women are actually doing their own embroideries of their clothes. वो सब जाके है ना अपनी हैंड एम्ब्रॉयडरीज करते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है, कपड़ा आता था, वो अपने हैंड एम्ब्रॉयडरीज करते थे, ये लोग बैठते थे। दिस वाज द लाइफस्टाइल, एंड ही डिड डेफिनेटली डिपिक्ट a pretty close to reality lifestyle, but it wasn't Pakistan. It was not pre-Pakistan either. And also props were used very, very efficiently, and they also were, I mean, all of the props and everything was justified, the costume justified, but whatever he was, I think it should, हीरामंडी को बिल्कुल उन्होंने चेंज कर दिया। अच्छा, मुझे एक बड़ी मजे की बात है ना याद आई, which I have to bring up because I just realized that. Did you realize that they were all wearing shatus and pashmina shawls, embroidered shatus and pashmina shawls, beautiful shawls, but it's Lahore and it's not in the middle of winter. They're showing, like, Eid, they're showing summer times, they're showing all seasons, because the whole thing works around a whole year or maybe a couple of years, because they are depicting. They've shown a period also. उनकी माँ का उसका No, they show 1945. Now, they don't fall in love within 3 months, and everything does not happen in 3 months. And the partition was definitely in full bloom. During partition, independence ka sara was in full bloom in Lahore in 1945. I mean, but uska nida it was, but khair, it was a fairy tale. It's something worth watching for the ones. Also, I will give you my view, and I want your view of Manisha Koiraala, who was बीबी जान थी, और जो फरीदन जो कि सोनाक्षी सिन्हा है, दो लेडीज जो मेन थी, राइवल्स जो थी, उनके बारे में, what do you think about their acting? I found this Malika Jan lady very interesting, and I've seen other movies of hers. Of course, and Manisha Koiraala, but Naveed, I'm not very good with Indian movies and actors' names. It kind of ends at Amitabh Bachchan. But तुम्हें अच्छी it kind of ends at Amitabh Bachchan. उसमें हम बात करेंगे, but they did well, right? They did an excellent job. And then, even that girl, the little heroine, also does. She does a fairly nice job. और वो जो लड़का था, what do you think about the boy? नहीं, वो सही नहीं था, मजेदार नहीं था, बहुत ज्यादा stiff था। I mean, like, उस जमाने में किसके सिक्स पैक्स होते थे? नहीं थे सिक्स पैक्स। 1945 में किसी के सिक्स पैक्स नहीं होते थे, एक्सेप्ट फॉर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। कोई भी नहीं जाता था जिम, और कोई भी नहीं जाता था हेवी। नहीं था 40s में भाई, वो नहीं था ना, मैं यही तो कह रही हूँ कि आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से पहले द कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग फॉर heavy weights was not there. ये लोग ट्राउजर्स पहनते थे खुली डुल्ली, और उनकी जो पतलून होती थी वो यहाँ तक आती थी, एंड यहाँ पे they would wear the belt. वो बेल्ट पहनते थे, and by the way, the ties were also incorrect. But having said that,
But you see, these are the things which are really worth noticing. You have to notice this. हाँ, लेकिन देखिए उसको, और अगर ठीक है बंदा ले लिया ऐसा जिसका हंग था या उसका मसल्स थे या सिक्स पैक था, तो उसको नंगा क्यों दिखा रहे हो? अगर आप उस पीरियड में जाएं तो आप कोई भी इंडियन फिल्म देख लें, 40s की, 50s की, मुगले आजम, पाकीज़ा, एनी फिल्म, महल, कहीं आपने देखा दिलीप कुमार या फलाना वो तो खैर that was that time now. This is not this time. Like right now, like even if you go ahead and in those days, when you go and even look at a Hollywood movie, they would not show skin. Even the men would not show skin. I have to beg to differ. But now everybody wants to show skin. Well, yeah. That and they did make sure that he had his six packs and like that hunky figure just for attraction level, because we are living in a world where everything has become a little more superfluous. Yeah, but I think overall I would say that everybody should watch it. To watch it, to actually comment and think and review, and ख़ास तौर पे अगर आपको शौक है क्या कहते हैं बड़े बड़े सेट्स का या ज्वेलरी का या कपड़ों का, तो ज़रूर देखिए। एक और चीज़, लास्ट चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कलर ग्रेडिंग? डिड यू नोटिस इस फिल्म के अंदर बहुत सारे मस्टर्ड एंड पीला रंग बहुत था कंपेयरिंग टू, क्योंकि सीपिया का वो फिल्टर डाला है, मुझे लगता है उन्होंने सीपिया का फिल्टर का वो किया था, which I felt that they giving it that period time, they were trying to show. But I think back then also these things were very colorful, and I mean I don't know if you've seen Pakiza, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था. Do you remember that? But Pakiza was one of the first movies that was put in color. Well, that's why. नहीं, मैं बता रहा हूँ, she's wearing reds, oranges and all that. इसमें रेड्स को भी बड़ा सटल दिखाया है, तो मेरे ख्याल से उसकी थीम वो सीपिया व्हाट आई एम सेइंग ना, कि वो जाके है ना, अगर आप है ना उस टाइम के फोटोज देखो, तो उन्होंने असल में फोटोज को जब कलर करते थे, जब वो पुराने आपने देखा था, अपने दादा के फोटो निकलता था और वो जाके, तो उसके अंदर जब थोड़ा बहुत कलर होता था, तो वो वाले कलर्स को उन्होंने so going back, so it's almost like having I would call it that it is this movie, this TV series is very much like the Bridgerton series. We'll talk about the Bridgerton series too. Yeah. And where it is stylized, and it's stylized based on that time and a time frame of pictures and paintings and photos of that time. So when you do see sepia, that's my point of view, because that's how I was looking at it, because there was a lot of beige and gray in the entire. I think what I'm trying to say कि जब वो उन्होंने daylight भी दिखाई है ना, तो मुझे लग रहा था कि it's all dark, it's all too dark. It could have been a little brighter. You're trying to see? So whole theme is kept. I don't know if you've seen इसी director की, संजय लीला बंसाली की राम लीला. No. Okay. Oh, you must watch that. Also, that too is a period film. It's a film, not a series, and that too has a similar, basically, background and backdrop, but it has more colors. So maybe that is director's कोई ना कोई इसमें लोचा होगा director का. He wanted to keep it that way, darker thing. But do you really feel that in Lahore at that point in time in the 1940s there were courtesans? Yeah, they were. There were proper courtesans, or it was just a quota? नहीं, तवाइफें भी थी, और देखो there's a difference, आपको समझना पड़ेगा. तवाइफें, नायका, रंडियां, ये they're proper words in Urdu. Okay, there's prostitution and वो भी लीगल थी, रेड लाइट एरिया था यहीं पर, और यहाँ गाने वालियां अलग होती थी, और शायद वो जो जिसको कहते हैं धंधा करने वालियां वो अलग होती थी. They were proper profession.
but वैसे वो दिखाते हैं ये. हाँ. They show that that's Malika Jan going ahead and saying Yeah. that इसको बेचा है, Yeah. लेकिन इसको सुनने के लिए आए हैं. हाँ. तो सुनने के लिए आए हैं comes that you are coming to see the show. Yeah. So if you are actually going ahead and going to, for example, the red light area in Paris, you when you go to see, you know, Moulin Rouge, or you go to see Lido, you are actually going and seeing the show, and that is a stylized show. But you can go just down the road, and you can, you know, there are prostitutes there, and then there are other, the stripper bar and this and that, and like name it, and it's all there. एक और चीज नोट की आयशा आपने. There's a question for you. I don't know if everybody gets it or not. I want to highlight this. वो देखा तो उन्होंने कहा था इसकी नत उतरवाई होगी. You know what that means? No, I did not get what Nat Utarvai means, I'm but gonna they tell kept you. on saying that it was her inauguration. And नत उतराई कहा जाता है जब when you actually lose your virginity. So that Acha, really? जी नत उतरवाई. जैसे दुल्हन भी हमारे यहाँ पहनती है nuts. So they take off. Acha, that's where that nut comes Yes, from. That's yes. why the women, Yeah. like in the olden days, used to have that big round circle over here, and everybody used to wear it. Yeah. Really? So नत उतरवाई हो जाती है, then they wear a tops type चीज. Anyway, so the जो highest price होती है, और बच्ची जब जवान हो जाती थी, लड़की जब जवान हो जाती थी, तो उसकी सेरेमनी होती थी. आज उसकी नत उतरवाई, यानी कि she lose नत उतरवाई to the फलाना फलाना नवाब. So वो जो भी हाईएस्ट बिडर होता था, फिर वो उसके बाद अगर वो नवाब चाहें तो वो उनको अपनी बनाकर रख सकते हैं, यानी कि एज इन रखेल कहते थे उसको, और वो उनके कोठे पे आते हैं and they used to consummate and all. But this was very different from the courtesan harems, जिस तरह है ना, that was in the Ottoman Empire, हाँ. and even in the Chinese courtesan harems, and where there were many of them, even in Arab, there were many of them around. Yeah. So like it's not, so they all stayed together, but it was it's. Do you remember that movie Umrao Janada? Yeah, I remember seeing it. के मस्ताने हजारों हैं, that song, the ghazal. So उसके अंदर भी दिखाया है, certain nawab has a certain what do you call that lady who just serves him, okay, in bed, but she can dance for everybody. Okay, all right. So that is what is being depicted. Yeah. Because they keep talking about the Nawab being her Nawab, yeah, or not her Nawab, and like, you know, the rivalry. Yeah. कि तुमने मेरा बंदा ले लिया, तुमने मेरा नवाब ले लिया. These are very interesting things. And also I want my audience, our audience to know, पहले ज़माने में इस वक्त लोग, आम लोग, not just नवाब्स, पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों को, खासतौर पे लड़कों को, तरबियत के लिए, एक तो तालीम होती है ना, तालीम तो इंस्टीट्यूशन में जाके, स्कूल मदरसे में, तरबियत के लिए, यानी कि उसकी तमीज़ तहजीब सिखाने के लिए कोठों पे भेजते. That's a very French thing to do. They used to do it in France as well. Really? Yeah, I didn't know it was that. a very French thing to do. You always, I mean, it's like, you know, sowing your oats and Like going ahead. it used to be a finishing school. It's a finishing school because but that was also in Lucknow, in Paris. In Paris, everybody was sent. Anne Boleyn. Yeah. Anne Boleyn went to finishing Because school, and she was one of the ladies in waiting for the queen, but then she also went into courtesan formation, and but she stayed a virgin, and that's what she used as bait for Henry VIII. Yeah. And which is also very interesting. Yes. How the whole virginity aspect becomes like, you know, this romanticized part of literature. Yeah. And Heeramandi, coming back to Heeramandi, and by the way, if you guys don't know, I don't know if you know it or not, I want my audience, our audience to know this. ये रेड लाइट एरिया जैसे हीरामंडी है, कराची में भी होता था, और हुआ क्या फिर,
जब जिया साहब का दौर आया, जब तक था हीरा मंडी भी थी, हीरा मंडी इन्होंने बंद कर दी। जब बंद करना शुरू की, इनके बिजनेसेस सब खत्म हो गए। तो ये जो लोग थी, तवाइफें भी और दूसरे धंधा करने वाली खवातीन भी, घराने भी, ये शहरों में फैल गए, डिफरेंट जगहों पर चले गए। तो पहले एक मखसूस गली या इलाका होता था, यहाँ कराची में नेपियर रोड करके एक जगह है, दैट वाज रेड लाइट एरिया ऑफ कराची। Really? या एंड टिल जिया साहब के दौर, विच इज 80s तक, मिड 80s तक, सॉरी अर्ली 80s तक, और उसके बाद उन्होंने खत्म कर दिया और वो शहरों में फैल गए। अब लाहौर में, कराची में, यू नो, दीज डेंस, अब तो खैर वो नहीं होते, मुजरे वगैरह तो नहीं होते, दूसरे काम होते हैं या धंधे होते हैं, बट देर एवरीवेयर। सो ये दैट वाज एंड दिस यूज्ड टू बी अ प्रॉपर प्रोफेशन, जो कि खत्म हो गया। सो गाइस, मेरे ख्याल से हमारी बहुत लंबी डिस्कशन हो गई है, एंड तुम तो सोच में पड़ गई। आयशा, क्या सोच रही हो? No, I was just thinking because, like, a lot of with changing times and political changes, because in China too, so many things changed because the military regime, when governments change, when you end up getting military coups in the country, so many different aspects of your culture and rituals sort of dissipate. They get lost in translation. Absolutely. So I think we better start wrapping up. Yes, बहुत लंबा हो गया, एंड आप लोग भी जरूर देखिए बकरा हीरा मंडी और एंजॉय कीजिए। Bakra Mandi is in Malir. Okay. कराची में 3-4 जगह लगने वाली है, बकरा ईद आ भी रही है, तो बकरा मंडी में अपने पसंद का जानवर पसंद कीजिए, जैसे हीरा मंडी में आप पसंद की लड़की पसंद करते थे। लेकिन उसकी नथर उतरवाई नहीं करना। Oh my God! I hope we got that. उसको ज़िबा करेंगे, obviously उसकी नथ उतराई ज़िबा होना होगा उसका। But guys, take care. We would like to say goodbye, and वो बातें तेरी and Lifeless Ordinary की तरफ से नवीद फारूकी and आयशा का सलाम। खुदा हाफिज।